Good evening, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all to the closing ceremony of the SNAMUN21. We are honored and privileged to have as our chief guest today, Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla. Shri Om Birla holds a master's degree in commerce from Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer. Sir was consecutively elected to the 16th and 17th Lok Sabha. In the 16th Lok Sabha, he was a member of the Standing Committee on Energy and Consultative Committee for the Ministry of Social Justice and Empowerment. In June 2019, Shri Om Birla was elected Speaker of the 17th Lok Sabha. Shri Om Birla has been District President, Bharatiya Janata Yuva Morcha, Kota, 1987 to 1991. State President, Bharatiya Janata Yuva Morcha, Rajasthan State, 1991 to 1997. National Vice President, Bharatiya Janata Yuva Morcha, 1997 to 2003. Vice Chairman, National Cooperative Consumer Federation Limited. Chairman, Confed, Jaipur, 1992 to 1995. Shri Om Birla is actively involved in social service and his contributions are noteworthy. To mention a few, he has been instrumental in the setting up of Nishulk Paridhan Uphar Kendra for distribution of clothes to the poor. Meri Pathshala for education in slums, shelter homes for the needy, Matra Gyan Kendra for providing education to housewives and working women. Sir has organized facilitation programs for the senior citizens in Kota. The historic and patriotic program Azadi Ke Swar to instill patriotism in the common man. Sir has also collaborated with other organizations to launch the Prasadam project with collective efforts to provide free food to the underprivileged. A medicine bank project to provide free treatment and medicine to the poor, helpless and needy patients. Launched a Green Quota campaign. Helped the cancer and thalassemia patients and also the differently abled with their basic needs. Led the relief team during rescue operations to help the flood victims during the devastating flood in Kota city. He launched the Ek Muthi Ann Rahat Abhiyan, a campaign to give relief to farmers affected by hailstorms. Uphar Kendra Yojana to provide quality products at reasonable rates. And led the movement to eradicate malnutrition from Saharia tribal area of Baran district of Rajasthan. Welcome, sir. Your contribution to the society is truly inspiring. We are grateful to you for accepting our invitation and gracing the occasion with your presence. And now, ladies and gentlemen, our guest of honor for the day, Major General Kulpreet Singh, retired. A warm and hearty welcome, sir. Before we begin with the proceedings for the day, I would like to request our worthy Deputy Headmaster, Mr. Yash Saxena, to share a few words with the delegates. Good evening, everyone. Thank you, Harshita, for that wonderful welcome. Harshita, could you please confirm, am I audible? Yes, sir. Thank you so much. Honorable Speaker, sir, General Kulpreet Singh, our worthy Headmaster, invited dignitaries, parents, teachers, and students. It is heartening to share that a lot of deliberations have taken place amongst these young leaders of tomorrow over the path of last 2.5 days. A lot of burning issues have been discussed in terms of global relations, crisis, viewpoints, and actions. So in this little time allotted to me, I'm not going to delve deeper into those issues. But what I feel convinced to be speaking about is our own nation and its ever increasing might in geopolitical scenario.
Ladies and gentlemen, India is at a crucial juncture, 74 years after independence. The nation is poised for a major power status. But the crucial question is whether India will be able to achieve that status because of internal and external constraints. Someone rightly said that the modern warfare will not be fought with weapons. Rather, it will be with pens, definitely referring to the economic might of the nations. 25 years ago, in the year 1995, the US Commerce Department declared India as big emerging market. Since then, the American and global investment and eagerness for India has increased. India is playing a major role in the global politics and economy. Perception has changed about our own country. But the big question remains, is India on the road to a major power tag? So, ladies and gentlemen, boys and girls, tagline is India has to be a regional power to realize its aspiration of becoming a global power. The two most important objectives of foreign policy should be and would be number one, security, both external and internal, and of course, the economy. So I would just throw some light on economy. There are great internal constraints like poverty, unemployment, illiteracy, healthcare, transportation. All of that we are aware of. But again, I'm not going to harp on those issues. Something less talked about. India still remains with a country where the maximum contribution to the GDP comes from tertiary sector. And the largest employer remains to be the primary sector. What about manufacturing? So it is high time for a nation like India to walk the way to become a manufacturing industry and country. Amongst external constraints, challenges for Indian diplomacy to contain China and Pakistan in the coming years remains at the forefront. Not to forget Nepal. To bring back Nepal to close fraternal circle is also a task in hand. But containing China will be the greatest challenge. After the recent clashes at Alisy in the Ladakh region, China will be hell-bent on blocking India's road to being a big power. In 21st century, engaging with Asia has both strategic as well as economic dimensions and therefore goes behind the rise of the Indo-Pacific. India has a major role to play in this spectrum of connectivity. Second is the issue of security. Again, both external and internal. For a developing country like India that is committed to enhancing the quality of life and its citizens, defense is usually the last thing on mind. Yet no government that is committed to such a cause can ignore the existing physical and psychological security threats. These threats are more than just ordinary for India, a country located in a disturbed and a dangerous neighborhood and facing both internal and external threats. Comprehensive national security helps a nation attain its aspirations, and robust security is a subset of that. India has a robust military machine. However, the lack of national security strategy, a national strategic culture, and a transformational approach towards its military capability prevents it from obtaining optimum benefit from its defense expenditure. So, my dear boys and girls, you will be the leaders of tomorrow and will carry the name of our great nation to all parts of the world in all capacities, be it to do with economy, society, culture, diplomacy, all the fields. So I leave you all today with this food for thought. Always remember the motto of Naam, Namak or Nishan. Keep the flag flying high. All the best wishes, dear boys and girls. Godspeed, God bless, and my compliments to the organizing committee and these young Turks of the Lawrence School Sana to have pulled through a blazing MUN conference. All the best wishes. All over to you, Harshit. Thank you, sir. Once the generative thought process of the youth is put together, it is sure to bring solutions. And that, my dear friends, was the purpose of our 3-day-long interaction. Insight, empowered with enthusiasm, SNAMUN21. Let us take everyone through the making
and unmaking of this enriching conference. It gives me immense pleasure to welcome you all to the 4th edition of the Lawrence School Seminar Model United Nations 2021. Secretary General, I now declare the 4th Lawrence School Seminar Model United Nations Conference 2021 open. Is you feel there is a correlation between US with the withdrawal of American troops and the situation aggravating? Okay, the United States does understand that the United States forces and actually the complete NATO forces were one of the primary reasons that the Taliban was not able to launch a full-on invasion. But the fact but we should leave now. If there is anything that you would like to convey to us, please let us know. What is it called? Getting the calendar of the United States. Revenue of the United States will be open to a question from the international press. studies. We hope this video reignited your memories of this 3-day of this conference. Reminiscing our journey of enthusiasm, our faces sure did glow, and our spirit, without a doubt, is all charged up again. Thank you everyone for being a part of this wonderful memory. Now, I would like to invite the Director General, Manik Ahluwalia, to address us. Good evening, ladies and gentlemen. As the Director General of SNAMUN21, it is my proud privilege to have hosted you for the past 3 days, where the delegates have engaged in fruitful debate. Being the Director General and hosting delegates from all over the country and abroad has been an enriching experience for me. I began MUN in the year 2016, and it has been 6 years since then. And in this small period of time, I have met hundreds of delegates, attended multiple conferences, and made many friends. And in these years, my knowledge of foreign relations, current affairs have just multiplied. The concepts of international law, like Jus Cogens and Erga Omnes, were one of the very few things I learned when I began MUN, which has instilled in me the fundamentals of international law. Over these past 3 days as well, whenever I joined each committee, there was something new to learn, not only to me, but to everyone else as well in the Secretariat. Over these past 3 days, seeing the committees in session was great and gave me a trip back to memory lane when I started MUNing. From historic committees like the NKVD and Mountbatten Plan to humanitarian agendas,
of the United Nations Human Rights Council. It has truly been a great journey for me. COVID has been a restricting factor for all of us, for we would have loved the opportunity to host you all on this picturesque campus of Sanar. COVID, however, has also given us opportunities that we never had before. Thanks to our school, I was able to attend the DXB MUN 2020 Dubai and the King's Academy MUN 2021 Jordan. I thank Simar Singh Gabaria, our Secretary General, and Harshita Verma, our convener, who have burned the midnight oil with me for the past 2 months, and with initial preparations starting from much beforehand. I have the utmost and sincere appreciation for the Secretariat, who have stood by me and helped each other with everything. It is an ode to joy to have had a successful conference. I would also like to thank members of the international press for making sure that all the committees function smoothly. I would like to thank my teachers for this opportunity, Ms. Ashley Solomon, Mrs. Mona Gautam, and Mr. Ranbir Singh Randhawa, and Mr. Rahul Menon and Mrs. Garima Rajpal, and their team of the Executive Board who have provided moderation to our committees. Above all, I would like to thank the Headmaster, Mr. Himmat Singh Dhillon. Thank you, sir. Delegates, thank you so much for attending this conference and making it successful. I hope that all of you had a wonderful time and a great learning experience. This has been an odyssey for me and the Secretariat, and I would like to thank all the people who went out of their way to encourage me. In the end, I would like to quote, "Life is a journey of either fate or destiny. Fate is a result of giving in to one's wounds and heartaches. Your destiny unfolds when you rise above the challenges of your life and use them as divine opportunities to move forward to unlock your higher potential." Unquote. You may think of giving in when times get difficult, but one must always persevere and never give in. Now, handing over the podium to the convener, Harshita Verma, to announce the much-awaited awards. This is Manik Aluwalia, Director General of SNAMUN21, signing off. Thank you. Thank you, Manik. Ladies and gentlemen, it is now time to announce the much-awaited awards for SNAMUN 21. The first committee, United Nations General Assembly, DISEC. The best position paper goes to the delegate of China, Ayush Vijay from GEMS OOIS School, Dubai. Verbal mentions in no particular order are the delegate of Israel, Adhiraj Mahajan from the Modern School Barakhamba. The delegate of Mexico, Ashna Garg from the Doon Public School, Panchkula. The delegate of Iraq, Ravi Kaushal from the St. Kabir School, Chandigarh. The delegate of Libya, Tirupati Fatela from Pine Grove School. The delegate of Belarus, Bhavya Khatri from MGD Jaipur. The delegate of Switzerland, Jairus Jacob from the Millennium School, Dubai. The delegate of Australia, Daksh Gariwal from the Lawrence School, Sanar. Special mentions in no particular order are the delegate of France, Arnav Jaitley from the St. M.R. Jaipuria School, Lucknow. The delegate of Somalia, Atharv Singh from Mayo College, Ajmer. The delegate of United States of America, Parth Bansal from the Lawrence School, Sanar. Moving on, high commendation in no particular order goes to the delegate of Singapore, Anam Ali Khan from HPS Begumpet. The delegate of Brazil, Zaina Chaudhary from MGD School, Jaipur. And finally, the Best Delegate Award for United States General Assembly, DISEC, goes to the delegate of Russia, Karandeep Gill from DPS Khanna. Congratulations, delegates. The second committee, United Nations Security Council. Special mentions in no particular order are the delegate of Afghanistan, Prabhat Rajagopalan
from Bhavan Vidyalaya, Chandigarh, and the delegate of India, Arav Gupta, from St. John's High School. Moving on, high commendation in no particular order. Delegate of United Kingdom, Shubhakar Dhulia from Welham Boys School, Dehradun, and the delegate of United States, Ashmit Singh from the Modern School, Barakhamba. And finally, the Best Delegate Award for United States Security Council goes to the delegate of Russia, Vishvesh Tiwari from St. M.R. Jaipuria School, Lucknow. Congratulations, delegates. The third committee, World Health Organization. The best position paper goes to the delegate of United States of America, Sameer Malik from Bhavan Vidyalaya, Chandigarh. Verbal mentions in no particular order are the delegate of Germany, Vanshika Agarwal from Emerald Heights International School, Indore. The delegate of Egypt, Adi Dev from Lawrence School, Sinar. The delegate of South Korea, Idhant from Sanskriti School, Delhi. The delegate of China, Harbani Kaur from Emerald Heights International School, Indore. And the delegate of Canada, Gauri Kishore from the Millennium School, Dubai. Special mention goes to the delegate of India, Arnab Balsal from the Lawrence School, Sinar. Moving on, high commendation, delegate of Sweden, Shaurya Medha from Sanskriti School, Delhi. And finally, the best delegate award, World Health Organization, goes to the delegate of France, Ria Dutt, Pine Grove School, Sabatu. Congratulations, delegates. The fourth committee, All India Political Party Meet. The best position paper goes to Dr. Subramaniam Jaishankar, Ash Roongta from Jayashri Periwal School, Jaipur. Verbal mention in no particular order are Prakash Javadekar, Akhil Afsal from the Millennium School, Dubai. Uddhav Thackeray, Vishwa Vijay Singh Rathod from Doon School, Dehradun. And Rajnath Singh Moli Shah from the Lawrence School, Lovedale. Special mentions in no particular order are Rahul Gandhi, Chinmay Mehta from Modern School, Barakhamba. Yogi Adityanath, Ajeshwar Singh Chahal from YPS Mohali. And Manish Sisodia, Ranveer Singh Kochar from Bishop Cotton School, Shimla. Moving on, high commendation. Malik Arjun Kharge, Shan from Bishop Cotton School, Shimla. And Narendra Modi, Shlok Mundra from Emerald Heights International School, Indore. And finally, the Best Delegate Award for All India Political Party Meet goes to Navjot Singh Sidhu, Aditya Das from the Lawrence School, Sinar. Congratulations, delegates. The fifth committee, United Nations High Commissioner for Refugees. The best position paper goes to the delegate of Angola, Kaira Datta from Pine Grove School, Sabatu. Special mentions. Third special mention goes to the delegate of Sweden, Sarthak Agarwal from the Lawrence School, Sinar. Second special mention goes to the delegate of France, Reet Rijwani from Emerald Heights International School, Indore. And the first special mention goes to the delegate of Iran, Manya Bansal, the Lawrence School, Sinar. Moving on, high commendation in no particular order goes to the delegate of United Kingdom, Apurva Singh, PPS Nabha, and the delegate of Germany, Arnav Goyal from Welham Boys, Dehradun. And finally, the Best Delegate Award for United Nations High Commissioner for Refugees goes to the delegate of China, Hiya Ratta, Sanskriti School, Delhi. Congratulations, delegates. The sixth committee, International Monetary Fund. Best position paper goes to the delegate of Germany, Anisha Sharif from GEMS OOIS, Dubai.
Verbal mentions in no particular order are Delegate of China, Sarthak Agarwal, Seth M.R. Jaipuria School, Lucknow, and the Delegate of Saudi Arabia, Survanshi Sharma from Emerald Heights International School, Indore. Special mentions. Second special mention goes to the Delegate of United Kingdom, Nikhil Jadvi from Mayo College, Ajmer. And the first special mention goes to the Delegate of United States of America, Adya Gupta from Modern School, Barakhamba. Moving on, High Commendation, Delegate of Indonesia, Mohak Jay from the Doon School, Dehradun. And finally, the Best Delegate Award for International Monetary Fund goes to the Delegate of Russia, Prathna Rahija from Modern School, Barakhamba. Congratulations, delegates. The 7th Committee, Cabinet of Mikhail Gorbachev. The best position paper goes to Oleg Baklanova, Arushi Aswa from the Daily College, Indore. Verbal mentions in no particular order are Yevgen Primakov, Shivam from the St. John's High School, Chandigarh, and Vadim Bakhtin, Swamik Garg from Doon School, Dehradun. Special mentions in no particular order are Vladimir Ivasko, Anushka Pawar from the Millennium School, Dubai, and Edward Shevardnadze, Darshan Dinesh, GEMS OOIS, Dubai. Moving on, High Commendation in no particular order are Mikhail Gorbachev, Vedant Nahar, Mayo College, Ajmer, and Vladimir Makarovich, Avni Chadda, Emerald Heights International School, Indore. And finally, the Best Delegate Award for Cabinet of Mikhail Gorbachev goes to Boris Yeltsin, Diya Atal from the Lawrence School, Sanar. Congratulations, delegates. The 8th Committee, United Nations Economic and Social Council. The best position paper goes to the Delegate of China, Adeshveer Singh Benipal, DPS Khanna. Verbal mentions in no particular order are the Delegate of Poland, Sara Kochi from the Millennium School, Dubai. The Delegate of Sweden, Krishna Sachdev from the Doon School, Dehradun. And the Delegate of Russia, Upamanyu Banerjee from the Sri Ram Millennium School, Noida. Special mention. The third special mention goes to the Delegate of Israel, Adit Veer Singh from Sanskriti School, Delhi. Second special mention goes to the Delegate of Taiwan, Sumisha Katti, the Millennium School, Dubai. And the first special mention goes to the Delegate of France, Navya Shori, the Lawrence School, Lovedale. Moving on, High Commendation, Delegate of United Kingdom, Arnav Gupta from the Modern School, Barakhamba. And finally, the Best Delegate Award for United Nations Economic and Social Council goes to the Delegate of United States of America, Aryan Jain from Manav Rachna International School, Faridabad. Congratulations, delegates. The 9th Committee, United Nations Human Rights Council. Verbal mentions in no particular order. The Delegate of Oman, the Delegate of Cuba, the Delegate of Libya, and the Delegate of Bangladesh. Special mentions in no particular order are the Delegate of Algeria, the Delegate of Tunisia, and the Delegate of Jordan. Moving on, High Commendation, Delegate of Armenia, Jihan Chabra from Saint Kabir. And finally, the Best Delegate Award for United Nations Human Rights Council goes to the Delegate of Israel, Myra Agarwal from the Modern School, Barakhamba. Congratulations, delegates. The 10th Committee, United Nations Development Programme. The best position paper goes to the Delegate of United Arab Emirates, Tamanna Ajit, the Millennium School, Dubai. Verbal mentions in no particular order are
The delegate of South Korea, Aryaveer Agarwal from the Doon School, Dehradun. The delegate of Mexico, Himanshi Tanwar, Rajmata Krishna Kumari Public School, Jodhpur. The delegate of Turkey, Arnab Mangal from the Emerald Heights International School, Dubai. The delegate of Cuba, Shabir Muhammad Iqbal from the Millennium School, Dubai. Special mentions. The third special mention goes to the delegate of Brazil, Kabir Sharma, Bishop Cotton, Shimla. Second special mention goes to the delegate of Germany, Bhavya Shekhawat, APS Dakshai. The first special mention goes to the delegate of Sri Lanka, Manan Gupta from Mayo College, Ajmer. Moving on, high commendation in no particular order are the delegate of China, Arav Bajaj, the Modern School, Barakhamba, and the delegate of Japan, Akshat Raj from St. M.R. Jaipuria School, Lucknow. And finally, the Best Delegate Award for United Nations Development goes to the delegate of United Kingdom, Kashish Sindhwani, the Modern School, Barakhamba. Congratulations, delegates. The Best Delegation Award for SNAMUN21 goes to the Modern School, Barakhamba. And the Secretary General Best Delegate Award goes to Dia Atal from the Lawrence School, Sanar. Congratulations, delegates. President, Old Sanarian Society and Chairman, School Management Committee. Major General Kulpreet Singh is an Old Sanarian, batch of 79. Sir holds a BSc degree from Punjab University, MSc in Defence and Strategic Studies, Madras University, Wellington, MPhil in Defence and Strategic Studies, Osmania University, Hyderabad. Certificate course in Management of Education Institutions, Amity University, Noida, and is currently pursuing PhD in Education Management from Riyadh Bahara University, Mohali. Sir has been a directing staff at Defence Services Staff College, Wellington, mentoring the future leaders of the three services, including international officers from 2006 to 2010, and has also experience in United Nations missions with multiple nations as Chief Military Information Officer at Headquarters United Nations Missions in Sierra Leone. Sir, may I request you to share a few words of wisdom with the delegates? I am honored to be the guest of honor for the 4th edition of the Lawrence School SNAR Virtual Model United Nations Conference SNAMUN21, which commenced on 16th August and has concluded today, 18th August 2021. Firstly, I would like to thank the Chief Guest, Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, for having consented to be the Chief Guest and taking out his valuable time from his very busy schedule to address the participants of the SNAMUN21. We should look forward to his address. Very grateful to you, sir. Secondly, I would like to congratulate and thank the Executive Board for their tireless efforts to make this virtual event a huge success. I would also like to thank the Headmaster, Mr. Himmat Singh Dhillon, and his highly competent team of teachers and students at SNAR for the conduct of an excellent event. Thirdly, I would like to thank all the participating teams and delegates for the huge participation for the prestigious online event. In spite of the COVID-19 pandemic, the participation in SNAMUN has grown over the years, and I can confidentially say, and very confidently say, that the 4th edition has been the best so far. The theme of the conference this year was very appropriate to the present state in the world, that is, non progredi est regredi, which is Latin for to not go forward is to go backward. The theme encompassed the message that this pandemic has taught us that by halting life, we are pushed back on the road of development. Thus, we must never stop moving
and we must never give in. The SNAMUN21 conference provides a forum to young minds to deliberate upon the critical issues the world is facing today, and not just deliberate upon, but also to take action and to do our bit in order to make this world a more peaceful and happy place to live in. In an effort to make this conference a learning experience for all, the organizers had chosen agendas from different parts of the globe. I was very happy to see the passionate involvement of all the delegates in the concerned committees and the high intellectual level of debates and discussions. I'm happy that even from the comfort and safety of our homes, a constructive debate would prevail in all the committees. Congratulations to all the award winners for their distinguished performance. For those who do not get a podium finish, I would like to say that each and every one of you is a winner. Participation is such a competitive event itself, and that is a victory for you all. In the end, once again, I would like to thank all the participating schools and their heads for letting their students experience this learning event. God bless. Shri Om Birla holds a master's degree in commerce from Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer. Sir was consecutively elected to the 16th and 17th Lok Sabha. In the 16th Lok Sabha, he was a member of the Standing Committee on Energy and Consultative Committee for Ministry of Social Justice and Empowerment. In June 2019, Shri Om Birla was elected Speaker of the 17th Lok Sabha. I am honored to invite our Honorable Chief Guest, Shri Om Birla, to address the virtual audience. देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सुंदर सोलन घाटी में स्थित देश के सबसे प्रतिष्ठित, जिसको 174 इयर्स 1847 में प्रतिष्ठित ये विद्यालय लॉरेंस स्कूल, जिसकी प्रतिष्ठा देश और दुनिया के अंदर है। यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी इस देश में अलग अलग सेक्टरों के अंदर जहाँ नेतृत्व कर रहा है, वहां विश्व के कई देशों के अंदर भी पढ़ने वाला विद्यार्थी वहां पर नेतृत्व कर रहा है। लेकिन उसके मूल में उसका इस विद्यालय है, उसकी शिक्षा है, उसकी नींव है, जो एक अच्छी शिक्षा और संस्कार उसको विद्यालय में दिए। वो देश और दुनिया में इस विद्यालय के पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और विशेष रूप से जो इस विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस विद्यालय के चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मेजर जनरल कुलप्रीत सिंह जी, हेडमास्टर हिम्मत सिंह ढिल्लो जी, डिप्टी हेडमास्टर यश सक्सेना जी, इस विद्यालय में उन विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार देने वाले सभी विद्यार्थी, शिक्षकगण और मेरे विद्यार्थी भाई और बहनों, आज लॉरेंस पब्लिक जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय के अंदर द सनावर मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस 2021 में मुझे भी जुड़कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरीके से दुनिया को जानना चाहती है,
दुनिया में जो जितने भी संगठन हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, ये आज का विद्यार्थी जानना चाहता है। और इसीलिए आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर ये चर्चा की है, इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया के अंदर सारे देश अब प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली से हम हमारा शासन चलाएं। और दुनिया के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, उन डेमोक्रेटिक देशों ने माना है कि लोकतंत्र ही डेमोक्रेसी शासन पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। और इसलिए जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो देश भी अपने यहां डेमोक्रेसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर विश्व के अधिकतम देशों के अंदर डेमोक्रेसी शासन पद्धति होगी, जहां जनता की सहभागिता होगी और जनता की चुनी हुई सरकार होगी। और इसीलिए पूरा विश्व अब एक होने की स्थिति के अंदर है। और इसलिए हमने देखा है कि कोरोना वैश्विक महामारी में किस तरीके से देश और राज्यों ने अपनी सीमाओं को तोड़कर एक साथ सामूहिक इस वैश्विक महामारी के लड़ने का प्रयास किया। और हमको बता भी दिया कि जब तक पूरा विश्व एक साथ सामूहिक मिलकर काम नहीं करेगा, चाहे महामारी हो, चाहे देश की अन्य ज्वलंत समस्या हो, सारे विश्व की समस्याओं का समाधान करना है, तो उसका एकमात्र विकल्प है कि सारा वैश्विक एक सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक साझा पद्धति से अपने अपने देश की समस्याओं का समाधान भी करे और विश्व की समस्याओं का समाधान भी करे। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने अभी हमें सामूहिकता का संकल्प दिलाया है। मुझे आशा है कि हर महामारी, हर युद्ध, हर संकट हमें नए विकल्प तलाशने का मौका देते हैं। और यही हमारे लिए चुनौती है कि जब एक वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को हिला दिया, तो किस तरीके से हमें सामुदायिक सहयोग के साथ सारे विश्व को चलाना पड़ेगा। आपकी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई विशेषज्ञों ने बताया कि वैश्विक संस्था यूनाइटेड नेशन किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार विश्व के समक्ष उपस्थित विषयों पर चर्चा करती है, संवाद करती है और उसके समाधान के लिए कार्य करती है। और यही हमने अभी कोविड के समय पाया कि किस तरीके से हमने, चाहे दवाइयां हो, चाहे वैक्सीन हो, हमने सामुदायिक प्रयास कर कर, सामूहिक प्रयास कर कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। भारत ने भी कोविड महामारी के अंदर पूरे विश्व के अंदर समस्याओं के समाधान का भी एक रास्ता बताया। और किस तरीके से भारत ने इतनी बड़ी भौगोलिक हालात, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी किस तरीके से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सफलता प्राप्त करने का कारगर कदम उठाया। ये बात सही है कि भी कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है,
लेकिन उसके बेहतरीन प्रयास हमारे देश ने भी किए, वैश्विक सहयोग भी किया और हमने भी अन्य देशों को सहयोग कर इस महामारी के समाधान के लिए सामूहिकता से काम करने का कार्य किया। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद पूरे देशों में एक बात उठी कि हमें वैश्विक शांति स्थापित करनी चाहिए और उस वैश्विक शांति के प्रयास के उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। 40 देशों की सदस्यता से 1945 में प्रारंभ हुई इस संस्थान में आज 193 देश शामिल हैं। भारत इस संस्था का फाउंडर मेंबर रहा है। यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का एक ऐसा उदाहरण है जहां पर सभी निर्णय सभी राष्ट्र मिलकर एक साथ लेते हैं। महासभा के अंदर 15 सदस्यों की एक सुरक्षा परिषद होती है जहां वैश्विक शांति और सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इन दोनों के साथ यूएन ने कुछ और बॉडीज भी हैं। यूनेस्को है, यूनिसेफ है, खाद्य एवं कृषि संगठन इत्यादि ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में समन्वय और प्रयास कर कई मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक भी और अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार समाधान के लिए सामूहिक प्रयास भी करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से यूएन वैश्विक शांति कायम रखने में सामान्य तौर पर सफल रहा है। यद्यपि कई क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पर उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर भी उन युद्धों के अंदर शांति बनी रहे, इसका प्रयास यूएन करता है। और इसीलिए यूएन के प्रयासों के कारण ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक शांति की दिशा के अंदर हम आगे बढ़े हैं और काफी हद तक हमें सफलता भी मिली है। मेरे युवा साथियों, आज पूरा विश्व अत्यंत गतिशील है और आपस में कनेक्टेड भी है। भौतिक दूरियां आज प्रासंगिक नहीं रही है। पलकों में, कुछ घंटों में एक छोर से दूसरे छोर पर हम पहुंच जाते हैं। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क इतना मजबूत है कि हमें सेकंड भर के अंदर पूरे विश्व की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, जिसके कारण हम काफी समस्याओं का समाधान कर पाए हैं। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत परिवर्तन आए और इस टेक्नोलॉजी के कारण ही आज न भौतिक दूरियां बची हुई है, न अन्य दूरियां बची हुई है। इसलिए हमारा नौजवान इस टेक्नोलॉजी के कारण विश्व की सारी जानकारियां अपने कई प्लेटफॉर्मों से जानकारी प्राप्त कर लेता है और उस देश के अंदर चलने वाली हर घटनाओं की त्वरित जानकारी भी देश के हर सक्रिय व्यक्ति को मिल जाती है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम विश्व शांति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि
हमें आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें विस्तारवादी नीति को भी रोकना पड़ेगा। इन दो विषयों पर, आतंकवाद पर जब भी मैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में विश्व में जाता हूं, अधिकतम देश इस बात के मत है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़नी चाहिए, और अधिकतम देश इस मत के भी हैं कि किसी भी देश की विस्तारवादी नीति नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी बाउंड्री वाल को क्रॉस कर न तो वहां आतंकवादी गतिविधियां हो और न उसकी अपनी बाउंड्री बढ़ाने के लिए प्रयास हो। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर और चर्चा होती है, वह महत्वपूर्ण विषय है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन एक सीमाओं पर रखकर जलवायु परिवर्तन के प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। जलवायु परिवर्तन में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है, और इसके लिए भारत हमेशा अग्रणी है। विश्व के कई मंचों पर भारत ने जलवायु परिवर्तन के विषयों को लेकर नेतृत्व किया है, जबकि हमसे पहले वाले देश जलवायु परिवर्तन के विषय को लेकर अग्रणी थे, लेकिन भारत वह देश है जिसने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा काम किया। ये देश वो देश है जहां आदिकाल से पेड़ की पूजा होती थी। हम जानते थे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो पेड़ लगाने हैं। आपको भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर वर्ष एक पेड़ जरूर लगाएं। ये संकल्प के साथ लगाएं कि ये पेड़ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम भी करेगा, हमें फल भी देगा, औषधि भी देगा। हर तरीके से वह पेड़ हमारे जीवनदायिनी बनने का काम करता है। फिर हमारा पेड़ लगाने में क्यों न सहयोग हो, ये एक विचारणीय विषय जाना चाहिए। और दुनिया भी ये मानती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ना है, तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करने का व्यापक संकल्प अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के अंदर भूस्खलन हो रहे हैं, असमय बरसात आती है, मौसम में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। और पिछले दशकों में आपने देखे होंगे लगातार हमारा टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और विशेष रूप से आने वाला विद्यार्थी इसकी चिंता कर रहा है, और आने वाला विद्यार्थी ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इस चुनौती के मानकर लड़ रहा है और भारत का नेतृत्व भी कर रहा है। भारत में कम संसाधनों के बावजूद भी हमने पूरे विश्व के अंदर कई वैश्विक समस्याओं का उचित समाधान दिया है। जैसे मैं अभी कोरोना की चर्चा कर रहा था, सबसे पहले वैक्सीन बनाने का काम दुनिया में किया तो भारत ने किया, और आज भी दुनिया के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाकर सारी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किस तरीके से संकल्प के साथ काम करता है। और इसके लिए हमें समय समय पर हम विश्व के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है। हमने क्लीन एनर्जी के विषय के अंदर हमने अग्रणी भूमिका निभाई है।
और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन हमने किया है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। 121 देश अभी तक उस अलायंस के सदस्य बन चुके हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे पिछली बार लोकसभा के अंदर हमने टीवी समाप्त करने के लिए एक व्यापक प्रयास किया है कि एसडीजी जो यूएन ने तय किए थे, और उसमें तय किया कि 2030 तक पूरे विश्व में हम टीवी समाप्त करेंगे। भारत ने लक्ष्य बनाया कि 2025 तक, 5 वर्ष पहले हम टीवी समाप्त करें। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जब हमने एसडीजी के जो गोल यूएन ने तय किए थे, उनसे पहले हमने काम करने का काम किया है, और इसलिए यूएन की इसी सामूहिकता की भावना के साथ हम काम कर रहे हैं, और आने वाले समय इसके परिणाम भी होंगे। विद्यार्थियों और मित्रों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को लगभग 76 वर्ष हो चुके हैं। उस समय स्थापना के जो लक्ष्य, उद्देश्य और वर्तमान के अंदर लक्ष्य उद्देश्यों को लेकर व्यापक परिवर्तन हुआ है। यूएन ने भी इन बदलावों को अपनाया है, और आज 21वीं सदी के अंदर यूएन अधिक प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। इसलिए भारत ने भी सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग समय समय पर की है, और यूएन के अंदर भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विश्व के अंदर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हैं, उसका हमें सामूहिक रूप से मुकाबला करना पड़ेगा। उन चुनौतियों को सामूहिक रूप से लड़ना भी पड़ेगा। इसीलिए भारत ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। हमने संसद के अंदर, नौजवान सांसदों के अंदर इसकी लगातार 3-3 दिन तक सेमिनार किए कि किस तरीके से हम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल को निर्धारित लक्ष्यों के पहले कर सकते हैं। और भारत सरकार ने भी संपूर्ण देश का एक साथ सामूहिक विकास हो, देश के हर जिलों को अपने निर्धारित मापदंडों के अंदर समानता है, इसलिए नीति आयोग ने भी एक कार्य योजना बनाई है, जो ऐसे 101 से ज्यादा जिले जो कहीं ना कहीं उन सतत विकास लक्ष्यों से पीछे चल रहे थे, या जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, उसके लिए 101 जिलों के अंदर इन तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना बनाई, जिससे कि हम संयुक्त राष्ट्र की इस पहल को, जिसमें 2030 तक के लक्ष्य तय किए हैं, उसको भी पूरा कर पाए और मानवता के जीवन स्तर को भी बेहतर बना सके। और इसीलिए उन जिलों के अंदर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुपोषण हो, पेयजल हो, ऐसे संबंधित विषयों को लेकर नीति आयोग ने एक योजना बनाई। सरकार ने उस योजना को क्रियान्वित किया है। अब भारत का हर जिला
अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप चलेगा, सबका समान विकास होगा, ये दूरदर्शिता सोच सरकार की है। और इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है, जिसके परिणाम आने वाले समय में अब दिखने लगेंगे। मित्रों, हमें यूएन के उन गोलों को प्राप्त करने के लिए आपकी संसद में भी डिबेट होना चाहिए। हमारे युवा विद्यार्थी, जो विषय आपने रखा है कि संयुक्त राष्ट्रीय जो संकल्पना है, उस संकल्पना को हम भारत में कैसे पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर और हमारी सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। हमारा नौजवान देश में हर कानून बनने की व्याख्या करे, कानून बनते समय समय पर उचित सलाह सरकार को दे, और इसके साथ साथ देश के ज्वलंत मुद्दों पर हमें चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। विद्यालय में संसद चलनी चाहिए, उस संसद में पक्ष विपक्ष दो पहलू बनाकर किस तरीके से हमारी चर्चा और संवाद का लाभ आने वाले समय के अंदर देश को मिले, इसके लिए हमारा क्या योगदान हो, ये भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। जब हमारे नौजवान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संवेदनशील विषयों पर चर्चा करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर चर्चा करेंगे, अच्छे सुझाव सरकार को भी देंगे, जनप्रतिनिधि को देंगे, तो एक अच्छे परिणाम हम भारत में ला सकते हैं। और इसके लिए हम एक सामूहिक चर्चा हर विषय पर विद्यालय में भी होना चाहिए, देश के विषयों पर भी होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी होना चाहिए। जिन जिन देशों ने बहुत जल्दी तरक्की की, विकास किया है, उन मापदंडों पर भी चर्चा होना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि भौगोलिक और जनसंख्या के आधार पर चर्चा करते समय हमारे मूल में विषय ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारे मित्र चर्चा करते हैं कि उस देश ने बहुत जल्दी तरक्की की है, वो देश हमारे बाद आजाद हुआ लेकिन हमसे कहीं आगे आया है। ये बात सही है कि चर्चा हो, इस बात की होनी चाहिए, लेकिन ये भी विचार करना चाहिए कि उस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, जनसंख्या क्या है। अगर उसको पैमाना रखेंगे, क्योंकि कई देश तो ऐसे हैं जो हमारे एक जिले से भी छोटे हैं, कई देश ऐसे हैं जो एक राज्य से भी छोटे हैं। इसलिए हमारी चर्चा के अंदर हमेशा भारत की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें कार्य योजना बनाने पर चर्चा करना चाहिए। उसका भी भविष्य में एक अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि हमारा नौजवान जितना टेक्नोलॉजी के अंदर आगे है, मैं विश्व में कहीं भी जाता हूं तो विश्व के हर देश के अंदर आईटी के अंदर तो विशेष रूप से भारत का नौजवान ही वहां नेतृत्व करता है। जब तकनीकी रूप से हम इतने मानव संसाधन हमारे पास है, तकनीकी रूप से हमारा नौजवान इतना दक्ष है, उसका उपयोग हमारे देश में भी होना चाहिए। और इसीलिए हमें इन सारे विषयों पर व्यापक चर्चा करना चाहिए।
विद्यालय के अंदर हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर अधिक मजबूत हो, हर सामूहिक कठिनाई और चुनौतियों में हम सामूहिक रूप से मिलकर लड़ सकें, उसका अच्छा समाधान हम दे सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मेरा भी एक प्रयास रहता है। कोविड के कारण मैं आपके विद्यालय में व्यक्ति से उपस्थित नहीं हो पाया। मेरी इच्छा है कि कोविड का संक्रमण जैसे ही कम होगा, देश की युवा पीढ़ी को मैं संसद की कार्रवाइयों को दिखाऊंगा। संसद के अंदर हमारी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, देश के अंदर आजादी के बाद हमने 75 साल हमारी आजादी को हो रहे हैं, भारत ने कितनी तरक्की की है, हमारी विकास की यात्रा, हमारी लोकतंत्र की यात्रा कितनी लंबी रही है, इसके लिए समय समय पर हमारे देश की सबसे सर्वोच्च संस्था लोकतंत्र में संसद के प्रति भी लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़े, इसके लिए भी हमने व्यापक कार्य योजना बनाई। और इसलिए केवड़िया गुजरात में जब हमारी कॉन्फ्रेंस, स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हमने कहा था कि देश का हर विद्यार्थी जैसे और किताब के ज्ञान को समझता जानता है, भारत के संविधान को भी समझे। उस समय भारत के संविधान में हमें अधिकार की बात होती थी। आज आजादी के बाद भारत का नौजवान अधिकार की चर्चा कम करता है, अपने कर्तव्य दायित्वों की चर्चा ज्यादा करता है, और हमें यही करना है। उस समय की परिस्थिति अधिकार लेने की थी, आज की परिस्थिति देश को देने की है। आज की परिस्थिति मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या सक्रिय योगदान देश को हो सकता है, उस सक्रिय योगदान में हमारी सक्रिय भागीदारी होना देश के लिए आज के नौजवानों के विशेष रूप से आवश्यक है। और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं देश के नौजवानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ूं। देश की जितनी भी जनतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उनके प्रति देश के नौजवानों का और विश्वास, भरोसा बढ़े। केवल मतदाता के मतदान करने तक हम सीमित नहीं रहे, सरकार की हर गतिविधि और कार्रवाई पर हमारा समय समय पर सरकारों को सुझाव देने का भी अधिकार है, और सरकारों को सही दिशा पर चले इसके लिए भी हमारा योगदान करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है जिस तरीके से विद्यालय आजादी के पहले का विद्यालय है, अपने इस विद्यालय के व्यापक अनुभव और यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी इस विद्यार्थी से लगातार जुड़ा रहेगा, और आने वाले समय के अंदर मुझे आशा है भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने में लॉरेंस स्कूल के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। देश की समस्याओं के लिए समाधान के लिए योगदान होगा, देश के आम आदमी की समस्या का सॉल्यूशन भी आप देंगे, और किस तरीके से हम आजादी के 75 साल में हमारे इस योगदान को देंगे भी सही, और एक ढांचा भी तैयार करेंगे कि आने वाले 100 साल में भारत कैसा होगा, इसकी परिकल्पना भी, एक रोड मैप भी बनाने का काम इस विद्यालय का विद्यार्थी करेगा। मुझे आशा है आपकी ये संसद, जिसमें व्यापक रूप से सार्थक चर्चा होगी, संवाद होगी, अपने अनुभवों को आप साझा करेंगे, देश में यूएन के अनुभवों को साझा करेंगे, यूएन की सोच को
भारत के अंदर किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं, कैसे हम अन्य देशों के अनुभवों का लाभ उठाकर भारत की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, कैसे विश्व के अंदर भारत कई विषयों पर और कई समस्याओं के समाधान में नेतृत्व कर सकता है, उसमें आपका योगदान होगा। पुनः मैं इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब श्री हिम्मत सिंह जी ढिल्लो को या सक्सेना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस स्कूल मैनेजमेंट के समिति के चेयरमैन कुलप्रीत सिंह जी को, और निश्चित रूप से मैं जल्द ही आपके विद्यालय में फिजिकल आऊंगा और जल्द ही आपके सारे विद्यार्थियों को भारत की संसद की कार्रवाई, संसद की गतिविधियां, हमारे म्यूजियम, हमारी लाइब्रेरी, हमारी आर्कीज, अन्य जो पुरानी हमारी संसदीय यात्रा, भारत के विकास की यात्रा है, उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी बने, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your encouraging and thought-provoking words. Our sincere apologies regarding the announcement of the Best Delegate Award for International Monetary Fund. The Best Delegate Award goes to the Delegate of United Arab Emirates from Mayur School, Ajmer, because of which the Best Delegation Award goes to the Lawrence School, Sanar. Since we are the host school, we will be passing the award to the runner-up school, Modern School, Barakhamba. Now, I would like to invite our worthy headmaster, Mr. Himmat Singh Dhillon, to propose a vote of thanks. Warm greetings from the Lawrence School, Sana. I'm indeed honored and privileged to express our gratitude on behalf of the Lawrence School, Sana, to our wonderful chief guest, Shri Om Birla Ji, who is the Speaker of the Lok Sabha. Thank you very much, sir, for presiding over the event. We really appreciate your sparing your valuable time, and our youth today is inspired by your message. Yes, sir, we will plant trees, we will arrest climate change, and we will make not only India but the world better. I would like to express our gratitude to our guest of honor, Major General Kulpreet Singh, President, OS Society and Chairman, School Management Committee. Thank you, sir, for your wise guidance and strategic leadership. A big thank you to our keynote speaker, Mr. Samarth Pathak. He is from the UNODC, and we are very privileged to work in collaboration with the UNODC. Our students are working on the Sustainable Development Goals, especially on SDG 16. And as we have been inspired by our chief guest today, we will continue to work on the UN goals. I would like to appreciate our dynamic DHM, Mr. Yash Saxena, for addressing us all and his support for the event. A big thank you to the school team, to the DOF and all senior management team members for ensuring that this was a smooth event. A big thank you goes out to all principal colleagues from around the nation and the world, and parents who graciously gave their permission to their children to join and to make this conference come alive. A heartfelt thank you to the executive board and the chairpersons, the vice chairpersons. Thank you for taking out time from your busy schedule to judge this conference. You were wonderful.
I must thank some 400 delegates from nearly 40 schools, young people, dynamic young people with great ideas who stepped into the shoes of world leaders who made a model United Nations come alive in the last 3 days. Thank you for joining us. Thank you for resolving global problems. I'm sure you will make the world better just in the way that you made SNAMUN21 such a grand success. We thank you all for joining us. A very special thank you now goes out to our wonderful students. Truly, this event was student-led, and our young students are the backbone of what we do, especially the SNAMUN21 team. Thank you very much. A special mention and appreciation goes out to the Secretariat. Thank you, Secretary General Simar Singh Gabadia. Thank you, Director General Manik Aluwalia, Convener Harshita Verma. You coordinated and organized the 4th SNAMUN21 on a virtual program very efficiently, along with the in-charge MUN, Mrs. Mona Gautam, and co-in-charge, Mr. Randhawa. Well done. A special mention and high appreciation goes out to the IP team headed by Afreen Tara Dhillon. Thank you, Kehkashan Sehgal, Himani Thakur, Anchal Chawla, Sia Mittal, Navya Khosla, Pavya Singh, Devika Sharma, Zoya Khurana, Ruhun Thakur, and Sana Sandhu, along with the English faculty teachers. The press had a very important role in this conference. Thank you, well done. A big thank you goes out to our Head of Faculty, Information Technology, Mr. Jamwal, Head of Faculty, English, Mrs. Neelam Tehlan, for their wonderful and unwavering support. Thank you, Mr. Kumar Gautam and Mr. R.S. Chauhan for the wonderful media cover. Thank you, Mrs. Bath and Ms. Bhavna Sharma for leading on the newsletter. A special thanks goes out to Dr. Praveen Gautam for his technical support. Truly, the technology has worked very well in spite of all the challenges. I would like to congratulate our Head of Faculty Humanities, Ms. Ashali Solomon, and her entire team for successfully hosting the 4th edition of SNAMUN21. Thank you, team comprising Mrs. Mona Gautam, Mr. Ranbir Singh Randhawa, Mrs. Meenakshi Solomon, Mr. Devesh Verma, Mrs. Ina Mehta Kansara, Mr. Ranjiv Solomon, Mrs. Reshma Bharti, and Ms. Himani Chauhan, Ms. Amarjit Chauhan, Mrs. Samita Mukherjee, Mrs. Avneet Chopra, and Mrs. Priya Dhillon. It is you who have helped to make this successful by making sure that all the loose ends were tied up. Thank you for the support. It was indeed a great pleasure to host nearly 40 schools from all over the nation and overseas. Thank you all for your valuable contribution to make the event a success and truly memorable. This conference ends today, yes. However, our work is not done. Delegates, I would urge you to go out into the world inspired by this event and especially by the great inspirational message of our Honorable Chief Guest, Speaker Shri Om Birla Ji. Go out into the world, change the world, and make it a better, more peaceful and humane world. Thank you. God bless us all. Thank you, sir. I now request the Secretary General, Simar Singh Gabadia, to declare
the SNAMUN21 closed. With 3 days of intense debate and deliberation, we have now come to the end of the conference. To view each committee session and interact with many of the delegates was indeed enthralling. Each and every one of the delegates has reflected the principles that an MUN stands for. The principles of diplomacy, intellectualism, willingness to take action, and courage to put your perspectives into reality. I spoke of growth in my opening address to you all, and I come back to it once again. J.C. Penney had said, "Growth is never by mere chance. It is the result of many forces working together." I hope SNAMUN21 proves to be one of the forces in each of your personal growth and will be a contributing factor to enable you to become informed and responsible future global citizens. I extend my heartfelt gratitude to the chief guest, Honorable Shri Om Birla Ji, for taking time out from his busy schedule and gracing the occasion with his presence. I thank the guest of honor, Major General Kulpreet Singh, for being here with us today. I thank the headmaster, Mr. Himmat Singh Dhillon, and the deputy headmaster, Mr. Yash Saxena, for giving us this opportunity. A huge thank you to the head of humanities faculty, Ms. Ashley Solomon, for always putting up with all our requests and requirements. A huge thanks to the MUN in charge, Mrs. Mona Gautam, for her constant support and help in everything. I thank the MUN co-in charge, Mr. Ranbir Randhawa. I also wish to thank Mrs. Ashima Bath and Ms. Bhavna Sharma for all their help. I thank Mr. Rahul Menon, Ms. Garima Rajpal, and the entire executive board team. I thank the entire IP team, Afreen, Kehkasha, Anchal, Navya, Sana, Zoya, Pavya, Devika, Himani, Ruhun, and Sia. In spite of being relatively new to MUN, they were the foot soldiers of the conference. My biggest thanks to the two people without whom this conference would not have been successful. Manik, the Director General, and Harshita, the convener. I could not have asked for a better team indeed. In the end, I would like to thank all participating schools and delegates for making the conference an absolute success. Thank you so much. It has truly been an honor. SNAMUN has come so far from a simple idea to conceptualizing into a successful conference in spite of all the challenges. But SNAMUN didn't come so far only to come this far. SNAMUN will continue to grow, and I hope it taught each one of you the same lesson. With this, I, the Secretary General, now declare the 4th Lawrence School Seminar Model United Nations Conference closed. Thank you, Simar. As we part ways, I hope each one of us is taking along with us something to contribute, cherish, and pass on to all we meet along the way. With the promise to keep moving forward, let us make a positive difference in this world in our own ways. Remember, non progredi et regredi. So with the hope of hosting you all in person next year on this beautiful campus of Sanar, this is the SNAMUN team wishing you all a safe and healthy year ahead. Thank you, ladies and gentlemen.